Hello, welcome back everybody. Come back to stream. Welcome back everybody. Okay, इसने एक चीज ट्रिगर नहीं की. Hello everybody. Welcome to the stream. Welcome to the again. Hope आज लैग ना हो stream. Hopefully Discord में भी स्मूथ चल रही है. Yo. No news today. Nice information to believe. Just to let you know, guys, I took this trade today, just before the stream. Just before नहीं थोड़े पहले ही था. Let's just say 1 hour, 2 hour पहले. In version of 5 minutes, after taking out this low, and some other lows, we had a displacement. We inverted this 5 minute both FPG. Same setup जो हम stream पे लेते हैं, and I targeted 50% of this week. And as you can see, we are dumping from exit that point. If anybody has doubt on that I did exit on that or not, let me show you the screenshot of that. Okay, some of you may have doubt that I am lying. I'm just gonna show it. Some of you, I know, not all of you. यस ये थोड़ा अजीब लग रहा है इसको. देयर वी गो. चलो इसको ट्रेडिफाई वाले को अभी छुपा के रखते हैं. कुछ ज़्यादा डिस्काउंट नहीं है उनका, भी ऐसा रखते हैं. Can someone explain again? Go back to the stream and watch it, please. Just 2 minutes ago. So that's a trade, guys. छोटा नहीं कर सकता तुम्हारे जितना, टेंशन मत लो. I got to earn few bucks for my own as well. Alright. I can see, you can see chart pretty clearly. But it's so hard to manage job plus trading. Yes, it is. Thank you, Suraj. Doubly for you to watch the whole content. Crazy. Because lots of people don't want to go through my live stream where I have dropped the most sauce in my career. I have never been, I mean, again, consistent on the live stream, but whenever I have traded on the live stream, I tried to do my best, give you all a free sauce. But people wants that everything in one template. That's why they keep saying कि भाई एक वीडियो बना दो. एक वीडियो के अंदर सारा कुछ नहीं आ सकता. You gotta watch every shit out there that I have done since last 2 years. Let's go S5. I mean, क्यों बैन किया तुमको? आपने कुछ बकचोदी की होगी.
तो या एज आई वाज सेइंग दैट अगेन, मैंने जो 3 साल में सीखा वो तुम आधे घंटे में तो सीख लोगे नहीं, वही चीज़ है. That's why you gotta watch each and every live stream. And then in anybody, let's say if you are learning from somebody else, I would highly suggest that look at the work they have done in the past 2-3 years and watch whatever they have done. If they have, I mean, journal their career even a little bit online somewhere. ES is choppy, NQ is choppy as well. So hopefully we get the move, one side move. राइट. अभी भी एनक्यू का वो है बाकी है कल वाला, तो वही है. यप. कर दी थी. नहीं. I just requested a payout from Lucid. How much time does it take to hit bank? It's gonna take, if it's your first payout, it's gonna take, I mean, every payout takes 4 to 5 days, business days. Just let it know. But it's gonna hit your payout, that's for sure. As see guys, तो एक चीज होती है पे आउट अप्रूव होना एंड पे आउट बैंक में आना. आई डू नॉट गिव शिट अबाउट पैसे कब आएंगे मेरे बैंक में, कब आएंगे. What I care about is how fast my payout is getting approved, so I can restart my journey in the same account, right? And Lucid does it in 1 or 2 minutes. That's all I care about. Oh yeah, yes भाई. अब वही हो sorry. Yes, these 5 minute FPG got inverted. That's the trade I took. Okay, I'm removing that just because it wasn't on stream. Okay, I'm gonna mark some internal lows and internal highs if we can do something around that. My work market login shows suspended. This is the first time signing up with them. Again, if you are signing up with them before payout, then it won't work. Wait until you request the payout. Once they send you invitation or something like that from Lucid, you can sign up. Thank Tinku ji bhaiya. Yeah, I mean, if you are looking for liquidity sweeps all the time, then you're gonna miss out on some moves. But if it's your setup, then yeah, I mean, it's fine. I got invite. Just open the ticket support. They're gonna solve it out. I have never ever seen somebody getting issues with Lucid. अगर तुम्हें आ रहा है तो तुमने ही कुछ गलत किया होगा. 100 मैं बता रहा हूँ. Even I got DM'd on Instagram some as भाई जो है. I mean, never seen Lucid doing some fishy stuff. As soon as they start doing something fishy, I'm gonna stop trading with them, guys. Don't worry about that. And I will see that a month or 2 months before. अरे लूसिड में इश्यू नहीं है तो फिर भी एक बार बात कर लो. क्या पता वो वर्क मार्केट से बात कर ले. और वर्क मार्केट में टिकट ओपन कर लो. अगर मैंने देखा है कि अगर लूसिड में किसी को इश्यू होता है भी है तो उसका सीईओ आके आंसर देता है भाई. ये तो आई मीन अगेन रिमेंबर लूसिड इज वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेबल कंपनी राइट नाउ इन द फर्म. एनीथिंग कैन हैपन इन 6 months, बट अगेन as long as I'm trading with them, you don't have to worry about them. Lucid is super cool, I know that. वर्क मार्केट, अरे वही चीज़ है कि बात कर लो वर्क मार्केट से, हो जाएगा इश्यू क्लियर. अगर नहीं होता वर्क मार्केट से बात करके तो फिर लूसिड से बात करो कि ये इश्यू क्लियर नहीं हो रहा. कर देंगे वो कैसे भी करके. बट वही चीज़ है कि थोड़ा सा पेशेंस रखना ज़रूरी है. लोगों के पास पेशेंस है ही नहीं, हमारे लोगों के पास स्पेशली. हमें तो भाई 24 आवर्स में इश्यू क्लियर चाहिए. नहीं, इट टेक्स टाइम. सो या
chill out, wait for as long as payout approve होगा you will get paid. Market is about to open in some time, guys. Market is about to open in some time. I trade as soon as market gives me IFEG. I don't wait for the retest. Sometimes market's not gonna retest. Sometimes market is not gonna retest. Alright, market is open. Now chaos starts, guys. Wait करते हैं guys, chill out. We don't need to rush into any trades. Just here. We have swapped the liquidity. We're gonna wait for some inversion if we can get some inversion. Alright, we are dumping now. No, I do not trade in Indian markets. Why is that question even there? Our trading like 2 wins. I mean, that's a rule. Like, I don't trade take more than. Oh my! What the fuck is happening, guys? What the fuck is happening, dude? Alright. भाई आज का bias क्या है? I do genuinely do not have bias today. It's just chopping around. गवर्नमेंट शटडाउन टेंटेटिव हो गया सब एनएफटी। भाई कितनी बार गवर्नमेंट शटडाउन? फंडिंग नहीं है क्या उनके पास चालू रखने के लिए? हर रोज गवर्नमेंट शटडाउन कर रहे हैं। Wow. Where are we going? Where are we going, guys? We did not take out that high, but I think there was SMT or something like that on that high. No, there wasn't. Okay. किसी में भी वो हाई नहीं, NES में तो कब का निकल चुका. My bad. I think this was the high, right? So yes, there is a SMT on the highs on the high time frame. Made 1.5 के on. Let's go W crazy. ब्रो व्हाट अगेन रूल्स बुल्स की बात थोड़ी देर बात करते हैं गाइस. लेट्स फोकस ऑन ट्रेडिंग फॉर नाउ. ओके, आई विल टॉक अबाउट रूल्स लेटर ऑन. वी आर जस्ट डंपिंग.
भाई कहाँ भी जाना हो जाने दो भाई उसको, क्या कुछ कर नहीं सकते हम। वी गोना वॉच टाइम फ्रेम 3 मिनट टुडे, बिकॉज 1 मिनट पे चेस करने का मन होगा। वी हैव ड्रॉप्ड अराउंड 103 points, so that's that. It's not that big of a drop knowing what market has been doing in last 3 4 days, or I mean पूरा दिसंबर जनवरी even still मारेंगे हम, वेट करेंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, we do not predict what's gonna happen, we just wait for what is happening and then we do it. I know the thing you are saying is right, but again, if that does not happen and if you see even like even little bit hint of that happening, you're gonna go into trade. That's why I do not like to say that. Just wait for it. Wait, no, you cannot do that. Sindes. Guys, do not fall for the traps which people are giving you online के सस्ते में अकाउंट दे दूंगा, ब्ला ब्ला ब्ला। वो सब मत करो, ऑलरेडी 2 बंदे बैन हो चुके हैं। I prefer you guys to trade with the top of the top firm by paying your full amount. I do not want you to fall for that traps. हम इधर पागल बैठे जो हम पूरे पैसे से अकाउंट्स लेते होंगे, तो मेक श्योर यू डू नॉट फॉल फॉर द ट्रैप। व्हाट इश्यू है? अगर तुमने अगर कुछ गलती की है, दे नेवर गोना अनबैन यू, जस्ट नो दैट बिफोर you guys start telling me issues that you have. लोग बताएंगे मैं मेरे पास कोड है, डिस्काउंट कोड है जिससे इतना ऑफ मिल जाएगा, उतना ऑफ मिल जाएगा। डू नॉट डू दैट गाइस। जीसीटी बाय 5 सेकंड चार्ट में भी तो ट्रेड लो। अरे यार मत करवाओ भाई वो सब चीजें, भूल चुका हूँ मैं। थैंक यू बाय द वे जे फॉर द 99 rupees. Double is in the chat for AJ guys, double is in the chat. वही बोल रहा हूँ, डबल इज इन द चैट फॉर द एजे। अब तुम बताओ गलती किसकी है, फिर अनबैन कैसे मानो करेंगे वो लोग। गिव अवे के लिए पैसे जोड़ रहे हैं, लेट्स गो एजे भाई, धीरे धीरे दे रहे हैं। Chargeback is something that if you buy the accounts with the credit cards and then later on you tell your bank that this is a fraudulent transaction, so bank recharge that company for that money and you get your money back, but again you get banned on the firms as well. And you may get, see now firms are sharing their data, right? So if you are banned on one firm, you may get banned on the other firm, just because they do not want scammers customers overall. So it's way better to not do that. Same trade by through by I have been trading 15 second, my 2023 was on 15 seconds. आज भी stream पे जाके देखो 2023 की। So yeah, so they never gonna unban me? No, they will not. Why would they unban you? Give me one reason. Why would you trust somebody like that, even in the first place, who you don't know?
I highly suggest you do not change your tradeover credential. इजी मत बनाओ गाइस, कभी भी डेटा लीक हो गया, यू आर कुक्ड. tradeover पासवर्ड आर लाइक हैवीली प्रोटेक्टेड एंड लाइक थोड़े हार्ड होते हैं गैस करने के लिए. बड़ा तुम करना चाहो कर सकते हो आई गेस. Bro, I want to start NQ, so can you suggest me any model? I have NQ few times. It's gonna take time for you to understand NQ. That's for sure. That is for sure. I mean, again, I trade with the strategy. If you like it, you can do that. Latter the brain dead है भाई. मैं बता रहा हूँ. Yes, you can change. No, you do not go for the first inversion. Wait for after this many dump. Just wait. Do not take trades like that. आशीष भाई पूछ के भेजना. मैंने ऑलरेडी थोड़ा इंतजाम कर लिया था उसका. तो अभी जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दूंगा. Yesterday NYPM session low taken. Yes, we have taken out liquidity which was building around these highs and lows. अब तक कुछ अब तो भाई वेट करना पड़ेगा. आई थिंक तुम पासवर्ड चेंज कर सकते हो फॉर श्योर. आई डोंट नो, मैंने कभी ट्राई नहीं किया. लोगों के यूनिक पासवर्ड देखे हैं मैंने. NQ is just keep going down. For how long we gonna go down, guys? For how long? वो तो सेकंड 1 सेकंड पे भी लिया होगा ये फ्यूचर्स, बट प्रॉपर ट्रेड्स 15 seconds. 15 seconds I used to trade regularly. ये भी प्राइस एक्शन तो बढ़िया है कि डम कर रहा है, बट अगेन ये भी प्राइस एक्शन हमारे लिए तो बुरी ही है. ओ माय डेज, क्या हो गया? क्या हो गया एनक्यू को एकदम से? $221 dump guys, 221 point dumps. क्या करे भाई. How much do you expect the trade to create a buffer after passing? How much you take risk after buffer? रुक जाओ, पहले मैं कान में बहुत जोर से बज रहा है. So yeah, again, to create buffer, I try to risk on the 50K is $500 to $600 per trade. Again, that's me. You don't have to do the same thing. And after buffer, I just flip the days for the payouts. I do not risk it after that.
नो, ये डिड नॉट मिस द ट्रेड, बट अगेन तुम्हारे सेटअप का था तो मिस, मेरे सेटअप से तो कोई बना नहीं अभी तक. Are we in how many days you have received your Lucid Live funded accounts after six payout? I don't know, wallpaper. I never got to six payout on the same account. I'll tell you when I do. I'll tell you when I do. Bro, how do you study more about market through backtesting? Or I do not like to do backtesting. I just watch and watch and watch market again and again. Again, it's the same thing repeating every day. I try to watch as much as possible how candles are printing, how market is behaving. Try to compare market with different pairs. Thank you. Yes, it can take 3 to 4 weeks wallpaper. See again, live account can take, it's with the every firm issues. हम तो कभी पहुंच ही नहीं पाए यार, never got to that stage. Yeah, 4 weeks. Yeah, you can wait for the 4 weeks. You have made shitload of money. If you are on the sixth payout, you can wait little bit, right? भाई मुझे पता नहीं यार. गलत. Yes, escrow accounts are. I think Lucid has escrow system, right? Um, I'm planning to go with 150 Ks if I do go live sometime with max balance. I think $16,000 is allowed to go live per account. So that's what I'm planning to do. Let's see how we react, guys, on this FPG. There is no displacement such of, so I'm not gonna trust it too much. Okay, but if we do invert with the some kind of confirmation here and there, oh no, now there is a good. Okay, I'm gonna watch on the both indices, guys. If we can get proper entry in any of those, should be all right. But again, we can get faked out, right, guys? It doesn't have to be that we start going back up. There is can be a fake out, so be very again careful about taking this trade. I'm with their old pro account, so 30K max I can take to live any per account. Anything about that? 30K per account. That is crazy. Okay, guys, we have inverted. Just gonna try a small long. Again, we can get faked out. तो risk इसके हिसाब से करना. Okay. Uh, this is like a trial and error वाला trade. But we're gonna go break even very fast. I need after that win. If it's not pushing, probably that's the case. After it makes a top week of this, I'm gonna go break even. But if it looks like it is holding and it's not pushing,
Come on, it has to hold this push now. See, moves like this 200 300 point down can get us faked out so many times longing this. But again, if there is a setup, I'm not gonna deny that setup and not take it. Yeah, I think it's very tight as well, Rakna guys. 36 point. जाता है तो बढ़िया है, नहीं जाता है तो भी बढ़िया है. Ah, if we can get one little bit more push to the upside, I think it's a fake out probably the way it's behaving right now. It should have just pushed right away. But again, anything can happen. I'm not moving myself, sticking to. Yeah, ES looked better, right? Again, if ES can push, ES में कितना SL बनता था? That was the close 6. Yeah, ES was better, I guess. And yeah, alright, guys. I'm out of that trade. Again, the same setup that it has failed again and again for me has failed ever again. Again, if anybody was waiting for us to get faked out and took a entry on this inversion of this 1 minute continuation inversion, they banked some money. I guess they're gonna bank some money, I guess. But yeah, shit had NT हो गया मेरे साथ. कंटिन्यूएशन शॉट बन सकता है गाइस इधर से, पर वही चीज़ है, अभी एक ट्रेड से बाहर आया हूँ. एम आई चेजिंग, एम आई नॉट चेजिंग, वही चीज़ है. आई एम नॉट गोना गो इन. बट इफ एनीबडी डिड नॉट टेक दैट ट्रेड, दिस इज लाइक कैन बी अ probably a setup once ES invert this. Look at the confirmation with the ES and you can short it, you know. But again, I'm not taking this. I'm gonna wait for the better opportunities if we can get it. But yeah. All right. Again, the way it behaved right up there was probably the I should have left it alone. But again, मेरा setup ये है कि I do not move my SLTPs that quickly, and I'm gonna stick to it. I know, Srini, you can. I'm very close to doing that. Don't worry, I'm planning something. I'll contact you because that's you are the only person I know who has live account and has run up those accounts. I'm gonna ask you for sure how you have done it, right? And once I do, I'm just stacking or milking firms right now. As soon as I'm done with that, I'm gonna come to you and ask for the advice. It should have behaved. It just should have like sort up, right? If you see our trades like inversion वाले जो भी previously अगर तुमने देखे होंगे लाइव स्ट्रीम में कहीं भी, as soon as it inverts it should not just play around that most of the time, right? It's like again मैं ट्रेड में तभी रहा था कि there are few times कि जब मार्केट नीचे आके ऊपर जाती है, but most of the time it should taken out like some हाइस और लोस, जो ये इधर हाई था उधर तक मिल जाता हमें, वही चीज़ें विच डिड नॉट हैपन इन दिस केस. अभी ये शॉर्ट काम कर जाएगा, इन्वर्जन शॉर्ट.
You can open live accounts, but there's so much again, you gotta move things to the Dubais and blah 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 blah. You gotta do lots of stuff. So again, it's very hard if you are pretty new. Just don't wanna get into it. I highly suggest that. Wow, that shot again did work out. If anybody took that, again, 1 minute IFPG. I need to do something about it. See, I've been faked out so many times like this. I need to really do. I think I need to wait for the first retest or first IFPG to I guess give us a momentum to the upside. But yeah, I need to work something around that. Uh, we'll see. We'll see what we can do. But again, I did warn you guys that this can be a fake out. It wasn't trade like yesterday. Continuation trades are always better than we are trying to like again predict the bottom of the market. So better trade could have been the inversion of 1 minute hindsight. वो hindsight लगता है. By the way, thank you Srini for the 400. I totally forgot to mention that. Thank you so much for the 400. Love your support. Again on the trade side, on the charts, हाइंडसाइट ऐसा लगता है कि ये इसका वेट कर लेना था. बट अगेन अगर ये इधर से शॉर्ट अप हो जाता, आई वांटेड टू बी इन दैट मूव. नहीं हो पाया, नहीं हो पाया. But yeah, as soon as I should, I mean, again, I need to do something that if I do get inverted on my longs, I need to get in as soon as possible on the moves that gives pullbacks. But I'm gonna work on it, right? I'm still every day getting better. But yeah, it sucks. It sucks to take that SL. कब की आ गई थी? I guess there's a big ass gap right there. अभी फंडेड का क्या स्टेटस है? आई हैव 3 lucid 150 कैश एज यू ऑल नो. I'm gonna request payout on those tomorrow. So that's a W. I flipped those accounts दोपहर में ही. I think I did post a story about that on the Instagram. Wow, continuation trade would have been monstrous, guys. That trade could have been monstrous. 25, 23 point stop loss and like crazy. So yeah, I'm gonna request $9,000 tomorrow. Bro, you told us to not trade in London's session, but you traded because I have more than $500,000 in payouts. I am trading NQ since 4 years. I have way, way, way more experience than you. Do I say more, or that is enough for you? लिक्विडिटी नहीं है वो, हाई था प्रीवियस है. I can trade any sessions that I want. It's just that my suggestion is you do not trade any other sessions. Then again, if you are finding footing around in the London, New York session, you don't need to trade anything else. It just sucks. It's so painful to see where I in got faked out so hard. Abhishek bhai, it was a obvious What do you mean obvious continuation day? कहाँ पे आया था क्या एनक्यू का पेपर में? Okay, it's gonna be continuation day. How do you know that it's gonna be continuation day? Alright, we are into that gap guys. अगर इधर से ऊपर चले जाता, हाँ हाँ बढ़िया ट्रेड है भाई, बढ़िया. नहीं गया,
obvious continuation trade, blah blah blah. Just again, don't understand you guys. Yeah, that's what I'm saying. That is my long setup. I do not care that what bias is telling me, whatever blah blah. Oh my days, we are dumping. How should it react to nothing? We are not waiting for any reaction because this gap did get filled, but it's a revisit. So again, if we do get some momentum to the upside from here, it can be interesting. But now I'm gonna wait for it. You should have waited for CISD. Yeah, I should have waited for the CISD. By the way, what is CISD? What is CISD? Change in state of directory. Oh, okay. वो कब होती है? Should have done this, should have done that. Ima, okay, please, how much pay? Again, guys, I'm not gonna again. If you like me to be that streamer, I'm gonna cook each one of you. जो देख रहे हो ना, 140 people are watching, right? Again, if anybody comes out to me saying anything wrong, I can cook anybody. साला CISD का वेट करता तो मेरा $27,000 का पे आउट आज 0 होता. I should have waited for CISD. Shit. Please, Pete, I need this. My mom is kind of homeless. Should have waited for CISD, bro. Should have. Thank you, trading gains. This is what I try to do. Lolia, it's true. I have heard from you when I was in mentorship. साले जेलियो गांड सुरजा दूंगा. मिल गया ना कहीं. I should have waited for March to trade. इसीलिए लॉस हुआ साला. मार्च का वेट करना था. समझ में आ गया मुझे. नहीं, I cannot do that, Vivek. It's against the rules. You should have waited for December. Yes, I should have. बट जेन्युइन अगर वो बंदा जेन्युइनली बोल रहा होता तो मैं बता दे रहा हूँ, मैं CISD यूज नहीं करता, इसलिए मैं वेट नहीं करता. जस्ट लेटिंग यू नो. अगर ट्रोलिंग ऐसे मजाक में कर रहा हूँ, मैं किसी की ट्रोलिंग करता नहीं हूँ यूजुअली. जस्ट चिल. इट इज जस्ट फॉर द फन. ओके, डोंट टेक इट पर्सनली. लियो तो भाई छोड़ो भाई. उसको सिर्फ लिखना आता है. कभी पे आउट तो दिखाया नहीं मुझे. साला 2 साल से मेरी स्ट्रीम पे आके
SHX भाई सबका वेट ही करना था मुझे, आप यार समझ रहे हो ना। अगर गाइस ये 1 मिनट इन्वर्ट होते हैं, आई एम गोना ट्राई शॉर्ट कंटिन्यूएशन पे, क्योंकि अब मेरे पास बहुत, अगेन मैंने आई टुक अ लॉस ऑन दैट 36 पॉइंट। ओके, नाउ आई डू हैव वेरी लेस ड्रॉडाउन लेफ्ट फॉर टुडे। ड्रॉडाउन मीनिंग कि आज का जो देना होता है। आई हैव सेकेंड ट्रेड, एक ट्रेड बची है मेरे पास आज, तो ट्राई करते हैं कुछ देखने का, मजाक से हंस के। GTA 6 का वेट करना था भाई, वो बात सही बोली किसी ने, GTA 6 का वेट करना था। नहीं, तुम क्रिटिसाइज जो कर रहे हो, वही चीज है, क्रिटिसिज्म किसकी लेनी चाहिए, तुम वो चीज बताओ। If somebody is doing better than me, then I'm gonna again listen to that guy, of course, right? If Brian Stonks or Lento or somebody tells me coming that you should do that, you did something wrong there, and I also pointed out what I did wrong there, right? I also pointed out what I did wrong there. Okay. Sorry guys, I need to close my door. Uh, वही चीज है। Or guys, if this get inverted, I'm gonna short. Okay, just letting you know, this is also okay. Shorting. 25 points का stop है. I'm gonna go little bit even extra on this. Shit guys, shit. दादाजी आ गए थे, बड़े दादाजी आ गए थे. Alright, 1:1 quick. अब किसका वेट करना था? किसका वेट करना था भाई? अब कोई बताओ मुझे. Come on. Come on, little bit more. मेरी एंट्री खराब थी, फिर भी मुझे मिल गया 1:1. कमन, मुझे 44 तक चाहिए, थोड़ा और ब्रेक इवन डाल देना अगर कोई ट्रेड में बैठा है तो, अब कोई पॉइंट नहीं बनता पूरा देने का. आई हैव बुक्ड सम वन कॉन्ट्रैक्ट at the 1:1. I'm trading evals. I'm gonna try to do some funky stuff because I'm tired of this eval being up and down, up and down, up and down. But yeah, it is what it is. अगर किसी का 1:1 नहीं मिला और वो ब्रेक इवन आउट हो गया, बी डन फॉर द डे. आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्कॉर्ड पीपल. ओके, if it's your eval, you can stay in even if you want to. You cannot, if you don't want to stay in, you don't want to stay in. Okay. uh, दिखाता हूँ गाइस, रिजल्ट्स दिखाता हूँ, वेट करो, सारे रिजल्ट्स दिखेंगे ऑनलाइन तुमको. मुझे दोनों निकाल लेने थे वहीं पे, मुझे सारे $931 बैलेंस दिखा था मुझे, सॉरी $965 बैलेंस दिखा था मुझे.
Come on, get some reaction. All right, getting out on the second contract. Just about this. Okay, if it gets above this, I'm gonna getting out on the second contract. If not, then we're gonna stay in. But yeah, that's for sure that I'm gonna end up close to break even. If it's just profit में भी आ जाता साला. Okay, not stopping me out. इस हाई के ऊपर क्लोज ट्रेल कर दिया है मैंने, इसके ऊपर ही डाल दिया है स्टॉप लॉस। अगर वो हिट कर जाएगा तो कर जाएगा भाई, अब उसका कुछ नहीं कर सकते। ओके, रिमेंबर इसके ऊपर मैंने स्टॉप लॉस डाल दिया है 26 पॉइंट। अगर वो वापस आया तो वो चला ही जाएगा, फिर वो कट जाएगा मेरा, कोई टेंशन नहीं है। हमने एटलीस्ट ब्रेक इवन जितना तो सिक्योर कर लिया है इस ड्रॉप पे। होपिंग दैट इट डम्प्स, होपिंग दैट इट डम्प्स, बट अगेन लग नहीं रहा। साला जब हमने इन्वर्जन पे मारा था पहला, तब हो गया था डंप। होपफुली इस बार भी हो जाए। आओ, आओ। भाई दे दे, Please. दे ना दे भाई, अब आई एम गोना। भाई क्या बचा है वो। कम ऑन, कम ऑन, 44 बेबी। आर वी गोइंग देयर और नॉट? शुड आई ब्रेक इवन गाइस, शुड आई ब्रेक इवन, शुड आई ब्रेक इवन? हम अगर लो रिविजिट करते हैं मैं ब्रेक इवन डाल दूंगा। अरे नहीं यार, हाँ रिएक्शन गलत आ रहा है। ओके, सेकंड कॉन्ट्रैक्ट गोes break even guys, fuck it, fuck it. We do not want another pump back up. We need 40, 44. We need 40, 44, दोनों में से एक। 44 got tap, 40। Let's go big, fucking CISD, my, okay, calm down. देख आजा लाडले। भाई क्या स्टॉप लॉस बचा है भाई, डब्ल्यू या। भाई वो लास्ट के, ओके, 600 अब तो मैं था स्ट्रीम के पहले, अगर तुमने इंस्टाग्राम देखा होगा तो लास्ट के 400 बनाने के लिए जो मैंने मेहनत की है ना, लॉस लिया, फिर लॉस के बाद एक और टीपी लिया, ये वाला मजा आ गया यार। चला उसमें भी हो जाता अगर 4-5 पॉइंट ऊपर चला जाता था। तो अगेन 550 जो अब था स्ट्रीम के पहले, उसके 400, साढ़े साढ़े
300 कुछ ज़्यादा बुक नहीं किया मैंने, ओके, कम ही है, बट जो भी है, बी आर ई बैक इनटू पॉजिटिव्स। फर्स्ट एवर पे आउट लॉक ऑफ 700, थैंक यू, आई बीन ट्रेडिंग सिंस। अरे अनिक, अंकित कुमार डब्ल्यू, भाई गाइस अंकित कुमार के लिए डब्ल्यू कर दो यार, डब्ल्यू फॉर योर फर्स्ट एवर पे आउट भाई, डब्ल्यू, क्रेजी, $700, क्रेजी गाइस, क्रेजी। डब्ल्यू भाई, अंकित, अंकित भाई। Great super chat coming from Ankit bhai. Nah, bhai, Ankit bhai, I want you to spend on you. I want you to spend on your family little bit and not a lot. Okay, save most of it for your future expense in the prop firms. Do not go all in yet. जितना भी बजट है उसको 4-5 पार्ट्स में स्प्लिट कर लो और उसके बाद स्पेंड करना, ओके, ऑन द prop firms में बात बता रहा हूँ। And yeah, enjoy your payout, I guess. W. Micros better or mini depending on your account size and your risk appetite. Let's go fearless, bhai. Crazy, bhai. People are doing good in our chat. I give myself $5,000 of budget every month. That's how I do budget. I can spend it in one day. I can spend it throughout the month. I do not care, but do not go above $5,000. Sometimes I do go above $5,000, but again, ये पूरी अच्छी, बट यही चीजें ये दिखाना था, ओके, पैनल दिखाना अच्छा नहीं होता, बट चलो छुपा देता हूँ। I'm asking for when it's running. It is people do get banned for that, Vijay. I don't know how US traders are doing it, but in India it's like I will have to run those big banners जहाँ पे मैं लिखूंगा है it is for only education purpose blah blah blah, वो मुझे करना नहीं है अभिजीत भाई। When you वही चीजें, and you can trust me, it's fine. I hope you can trust me. So it's done for the day for the trades. Again, in the evals I might go for the third one, but fun dates में ऐसे done हो जाता है कि if I'm coming back from a loss and taking one win, then yes. And also I'm in the green. Even if it's little bit, $100, $150, $200 on 50k accounts, I'm gonna be very happy with this. इसी बात पे W, भाई W लिखने के कुछ और लिखने का ट्राई कर रहा है। 30 सेकेंड इन्वर्ट हो रही है गाइस, अगर किसी को शॉर्ट मारना है तो, बट इस रेंज पे छोड़ दो। W, do you suggest eval or direct funded? Evals always, do not go with direct funded. इसी बात पे W क्या, Tradovate, you get Tradovate in Lucid. राहुल भाई आपकी एक चैट होती है दिन में, अब मेरे पास इतनी बड़ी तो ऑडियंस है नहीं, तो मुझे याद नहीं रहेगा, बट
मुझे याद है कि आपकी एक चैट होती है हर रोज, और वो भी गिव अवे के बारे में। कर दूंगा भाई, टेंशन मत लो। और किसी को पता भी नहीं चलेगा, आउटसाइडर को। ओके। पूरा वीक है गिव अवे करने के लिए। लाइक दबा दो गाइस, 110 people watching. We got what, 41 likes. At least we should have 70 likes. 70. Let's go guys. If we blow evals continuously, no, you are profit for them, they're not gonna ban you. 100 likes तो और नहीं रहे, और गिव अवे कर रहे हो तुम। किसकी बात कर रहा है नेक्स्ट? थ्राइव, ओके थ्राइव। नेक्स्ट बोलेगा मैं लाइन में। लेट्स गो गाइस, 60 लाइक, वी नीड 80 लाइक्स एट लीस्ट। अभी मैं लॉन्ग नहीं करूंगा, इस चॉप के बाहर ही लॉन्ग करना चाहूंगा मैं। यस, टुक 3 ट्रेड्स, 1L 1W। Almost close to break even, just above break even. एटी ओटे ही कोड भेजेंगे भाई साहब। मैं इसीलिए लाइक नहीं करवा रहा हूँ कि मैं गिव अवे दे रहा हूँ। अगर आज तुम लाइक कंप्लीट कराओगे तो कल गिव अवे पक्का, होपफुली। अगेन मैं बता नहीं रहा हूँ टाइमिंग, क्योंकि लोग फिर इसके लिए आते हैं स्ट्रीम पे, जो मैं चाहता नहीं हूँ। हाँ लाइक, आई डोंट केयर। मैंने गिव अवे पहले भी किए, जब 2 वॉचिंग थी तब भी गिव अवे करता था मैं। 2 losses per day and I'm done. 3 mark media. I do not take more than 2 losses in one funded account. That's what I suggest to you. That don't do that. अब आई थिंक ये वैलिड तो लग रहा है मुझे, ये इन्वर्जन अगर किसी को लेना है तो। ये इधर इन्वर्जन था 58। हमने स्विप किया है हाइस, अगर तुम देखो 30 सेकेंड का। तुम ये भी शॉट मारते हो, मैं नहीं शॉट मारा। आई एम नॉट टेकिंग दिस ट्रेड गाइस, आई एम नॉट टेकिंग दिस ट्रेड। Gonna say it 1,000 times, I'm gonna write it. So not in trade. Okay, this is just the idea. अरे इसलिए तो मैंने मार्केट प्राइस पे रखा है ये, मुझे पता है तुम्हें फील नहीं मिलेगा। ये लो स्विप करने के बाद तुम्हें ब्रेक इवन डालना पड़ेगा गाइस। अगेन, अगर आप ब्रेक इवन डाल दो अगर ट्रेड में हो, ओके, अच्छे बच्चे की तरह। कितना स्टॉप था हमारा? 34 पॉइंट्स का, 34 पॉइंट्स दिए इसने। ओ माय गॉड, इट मिस्ड इट। 3 के आईएनआर में बेस फंडेड अकाउंट्स, फ्यूचर्स में तो बहुत टफ होगा वो प्राइस पे। ट्रेड्स तो मिल रहे हैं भाई, ट्रेड्स तो मिल रहे हैं आज, झूठ ना बोलूँ ना मैं। ट्रेड्स तो आज तीनों सही थे, इस पे फेक आउट नहीं होता मैं तो शुड हैव बीन इन्वर्जन। इस पे एंटर होते तो ये टीपी हो जाता, बट चलो फेक आउट हो गए। इस पे चलो मेरा काम हो गया, क्योंकि मैं 1000 से ऊपर इसी वाल पे बना नहीं सकता आज, तो मैं ट्रेड नहीं लिया। बट इसमें हमने सीआईएसडी का वेट किया, हमने वेट किया कि 500 साल कुछ करें हम, और 600 में साल में हमने ट्रेड लिया। साला जिस ट्रेड में लेता है ना उसमें साला ये करेगा, बट जिस नहीं लेता उसमें बूम।
लाइफ में पहली बार किसी को सुपर चैट दे रहा हूँ, थैंक यू भाई। बाकी अब अगले पे आउट पर करूँगा। थैंक यू अनिक भाई, टेंशन मत लो, चिल मारो, अपने अपने पे स्पेंड करो। अंकित कुमार, थैंक यू फॉर योर फर्स्ट सुपर चैट एवर, really appreciate your support. You watching is absolutely, I mean, again, is again for me at the top. Anything else is like secondary. Okay, thank you so much again for the super chat, and congratulations on your payout. W. 1 3 mark 3 बिहार। बिहार, तो तुम ये बोल रहे हो कि बिहार इज लाइक नॉट गुड? वाओ, लुक एट दिस 3 mark मीडिया भाई गाइस। I trade Asia Open, I trade London, but I do not suggest you to do that. Mixter, bhai. Yes, what? Alright, guys. रुको। Yo, we back. Is long as a good setup here at the inversion, I would wait for good setup, guys. ये साला FPG रिस्पेक्ट कर करके वापिस से पिक आउट कर सकता है। ओके, तो वेट फॉर द सेटअप्स। ये अभी भी इन्वर्ट करने का, तुम अगर तुम अर्लीस्ट इन्वर्जन की एंट्री देख रहे हो, so this is your earliest inversion entry where it gets invert close above this. Okay, even that I won't take entry because again we will be back into the chop. So I want market to close above the chop. Okay, and see what I can play around that. Okay, हाँ मैं भूल ही गया, मैंने और अकाउंट लेके रखे थे, उस पे ट्रेड कर लेता। Shit. Mr. X, what are the mistakes you are making? Right, you already know that what kind of mistakes are you making. Are you risking very less? Are you risking too much? Are you not taking trades? वही चीज़ है, आई गेस यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट मिस्टेक्स आर यू मेकिंग एंड आई मीन सेम चीज़ भाई, मैं और क्या ही बताऊंगा बताओ। एंड इट टेक्स टाइम फॉर यू टू फाइंड फुटिंग्स, राइट? तुमने पे आउट तो निकाल रखे, तो आई गेस यू नो व्हाट यू वांट टू डू और व्हाट यू शुड डू, बिकॉज पे आउट आ रहे थे, वही चीज़ें करो। इससे आगे क्या करना है तुमको? Bro, to be honest, I have been trading all this January month. I have started to watch your stream side, but taking my setup, your stream is helping me a lot to keep psychology to balance. Yes, that's what I'm here for, Preet. Thank you for the kind words. बहुत लोग गालियाँ देते हैं बट अच्छा नहीं बोलते। आई नो माई, मेरे बंदे अच्छा बोलते हैं मुझे, जो मुझे पता है स्ट्रीम पे 15-20 बंदे, बट यस, and we're gonna continue doing this. Even if you don't take setups, you will be able to learn a lot about prop because that's where I excel, right? I know more about prop than I think most of you guys, because I've been into this game for a long period of time. 2022 से मैं prop ट्रेड करता है टॉप स्टेप के साथ, when टॉप स्टेप वर 2 स्टेप
जहाँ पे पहले स्टेप में 30% कंसिस्टेंसी होती थी, दूसरे स्टेप में 40% कंसिस्टेंसी होती थी, और एक अकाउंट कॉस्ट करता था $150। तब से टॉप स्टेप, अभी का टॉप स्टेप कितना इजी है समझ लो तुम, वही चीज है। Just curious to know, have you changed from IFPG from order blocks? Yes, I have changed my strategy. Not changed, it's the same strategy, but again, I'm using IFPG set the entries. Abhishek bhai put in the vital mouse. I can see again. I do what I can. Again, it's it's about people what they want to do. I can only do little bit. But yeah, it's on people how to build their career and whatever on it or not. Learn from here or not. Yes. AJ, yes. Thank you. How to build buffer on funded accounts on 50K? I take 1:1. Should I risk $200 per trade and how much? If you know your strategy is working, Lakshman, then go for 200. I would say go for $350 risk. Again, if your strategy is working out, okay? Because what 1:1 में क्या होता है कि we want to get to the payout as fast as possible, right? We do not want, because every trader has a tilt coming. Every trader has a tilt. मंथ में एक बार आ जाता है, और लेट्स से 2 मंथ्स में एक बार आ जाता है अगर तुम बहुत डिसिप्लिन हो, बट वो टिल्ट आता ही आता है, right? And what I want you to do is like get to the payout before that tilt comes in, right? You know what, तुम कितने टाइम तक लॉक्ड इन रहते हो, उससे पहले पे आउट ले लो, and that is why we say that risk little bit more. So if you are right, you wanna get to the payout. रिस्क कम करने से क्या होता है कि तुम पैसे बनाओगे, लेट्स से यू गेट टू द 1,200 $1,500 बफर, राइट? और फिर तुम लॉस करते हो थोड़े ट्रेड्स, नाउ यू आर बैक टू $600 $500। सो एवरीथिंग गेट्स फ्रस्ट्रेटिंग एट वन पॉइंट कि तुम पैसे बना रहे हो, जा रहे हो, बना रहे जा रहे, बना रहे जा रहे, तुम वो साइकिल में फंस जाते हो, एंड दैट साइकिल इज सो अनोइंग दैट दैट टिल्ट जो 2-3 वीक बाद आने वाला था वो अभी आ जाएगा, एंड यू गोना एंड अप ब्लोइंग अकाउंट्स. It feels right to risk less, but it is the wrong thing to do, I guess. If M2 gets inverted, we might get short. Yes, if you get any inversion on the short side, it is valid setup right now because market is moving in that direction. But now that we have chopped around this area a lot, if you see, be very careful of taking this any trades here. Bro, can you explain your model? I trade ICT concept, inversion, fair value gaps, liquidity sweep. That. Thank you, Aryan. कितना टाइम हो गया गाइस? ओके, अभी टाइम है, देखते हैं 11 बजे तक कर पाए तो कर लेंगे हम स्ट्रीम. Bro, I bought 4 accounts with your code all blown again. If you are doing the same mistakes again and again guys, this is a inversion, good inversion, good inversion guys, good inversion. 28 पॉइंट्स का स्टॉप है. अगेन थोड़ा लेट हो गया दिखाने में, बट यस.
Why can you please sponsor me of 100 accounts? I mean, see again, that that is something I cannot do. Really sorry. I do my part of giving, doing giveaways, guys. That's all I can do, guys, for you. If I do announce give, I mean meetup, I will. If I do announce meetup, you can join there. I did try one setup, guys, somewhere around here. See what I mean. मैंने बहुत लेट एंट्री ली है तो मैंने ब्रेक इवन डाल दिया है. ओके, मेरा टीपी देखता हूँ मैं, थोड़ा छोटा ही कर देता हूँ. ब्रेक इवन ही मिलेगा मुझे, बहुत लेट एंट्री ली है मैंने. और ये नए फंडेड अकाउंट्स भी है, तो आई डू नॉट वांट टू फक अराउंड. कम ऑन यार. Almost to my TP, guys. Almost to my TP, and now just annoying. Don't do it. Yeah, I got break even. Fuck this. Oh, कोई ना छोड़ो. Maybe if I do get entry somewhere around here, I might try it. But again, I'm $24 in profit on those accounts. Sucks. मेरा प्लान वही था कि मैं इधर कहीं एंटर हुआ था, स्टॉप लॉस इधर ही था 16 पॉइंट, एंड मुझे इधर बॉडी तक चाहिए था. अगेन वो मिला ही नहीं. एंट्री ये चीज़ है, वो मिला ही नहीं. तब गॉट आउट ब्रेक इवन फिर. While Lucid में स्कैल्पिंग ऑफ लेस देन 10 सेकंड अलाउड है. एवरेज होती है आई थिंक लूसिड में, तो इतना सारे ट्रेड्स अगर 10 सेकंड से लेस होते हैं, आई थिंक इश्यू का ऐसा कुछ आना नहीं चाहिए. बट मेरे ट्रेड्स होते नहीं है तो मुझे पता नहीं ज़्यादा. बट आई विल फाइंड आउट एंड लेट यू नो. ओके, आई विल फाइंड आउट एंड आई विल लेट यू नो. री एंट्री पॉसिबल नहीं है गाइस. 50% ऑफ शुड नॉट बी अंडर 5 सेकंड्स. यस. ओके, प्रॉफिट्स के हिसाब से होती है, तो देख लो, विजय भाई को ज़्यादा पता है. Again, need to write that because lots of people join late, not in trade. Okay, I missed out that perfect trade right there. You trade fully NY session. Again, I do trade every other session as well. So it's again, yes, I try to look at market every time because that increase my experience day by day. I get better by watching market. I get okay. If you trade with limit order, then IFPG setups are, I mean, little bit harder for you to trade with, I guess. क्या चॉप मार रहा है. री एंट्री का कोई बन ही नहीं रहा सीन.
Alright guys, I think I'm gonna end it. I'm now forcing the setups and everything. Fuck it. Okay, not gonna trade. Yeah, market is chopping around. Let's see if it respects this dump. But yeah, with that work as well. Should we do? But okay, what should we do? But again, we don't sell on. IPG model ask. I mean again, वही चीज है कि मार्केट ऑर्डर तुम्हें लगाना ही पड़ेगा. You won't get feel like trades in the trades like this, right? You have to press button there. Even if you get a bad feel, just do count for that. Oh yeah. Alright. Oh, it's getting boring, guys. I'm gonna head up. Okay, I'm gonna relax. I'll see you guys, I guess, tomorrow. Alright, till then, take care. Bye bye. If you are, I guess, break even today, do not blow your accounts knowing that you can make profits or whatever. Okay, that's the only suggestion I have. I'll see you tomorrow. Bye. Take care.